अब्दुल खालिद है का? हाँ हाँ ओके. आवाज येतो ना? A warm welcome to all the dear participants on the behalf of Sri Chhatrapati Shivaji Bahuddeshiya Gramin Vikas Sevabhavi Shikshan Sanstha Kingaon, Mahatma Phule Mahavidyalaya Kingaon, Department of Sociology in collaboration with Internal Quality Assurance Cell, IQAC of college, organized an international interdisciplinary conference on gender equality. I would like to congratulate to Dr. Baliram Pawar sir for organizing this such a wonderful conference. I am also thankful to each and everyone who has joined on the Zoom meeting, and some persons have joined on YouTube Live. So I heartily welcome to each and everyone to this conference. First of all, I would like to invite today's chairperson, Dr. B.R. Bodke sir, to chair the session. Thank you so much, sir. Our today's conference chairperson, Dr. B.R. Bodke sir, has already joined the meeting. Thank you so much, sir. I would like to invite the inaugurator for today's conference, Dr. Yuva Pandey madam, to chair the session. The today's keynote speakers, Dr. Manita Kaur ma'am, she has also joined the meeting. Dr. Pratibha Jadhav ma'am, today's special invitees, Professor Mahmood T. Mahish sir, sir has also joined the meeting. I heartily welcome to sir. And Dr. Gunasekara AMAS, Head Department of Sociology, I would like to invite sir also. Thank you so much, sir, for accepting our invitation and joining with us. Now, I would like to invite Dr. Baliram Pawar sir to introduce the introduction of today's conference. all of you, namaste, good morning. Today's international interdisciplinary conference organized by Mahatma Phule Mahavidyalaya Kingaon, Latur, Maharashtra, University of Swami Ramanand Tirth, Marathwada, Nanded, Maharashtra, India. In this program, chairperson, principal of the Dr. B.R. Bodke, Mahatma Phule Mahavidyalaya Kingaon, inaugurators, Dr. Vibha Pandey, Uttar Pradesh, note speaker, Manita Kaur, Madhya Pradesh, note speaker, Pratibha Jadhav, Maharashtra, and special invited Professor M. Mahesh, Department of Sociology, University of Colombo, Sri Lanka, resource person, Dr. Gunasekara, Head Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Science, University of Rohan, Matra, Sri Lanka. In this program, special International Women's Day, organized Mahatma Phule Mahavidyalaya, Department of Sociology. Thank you so much, sir. Today's international conference has been organized on the occasion of International Women's Day. Now, today's inaugurator, Dr. Vibha Pandey ma'am,
to inaugurate the conference. Dr. Viva Pandey, ma'am. हेलो। Yes, yes, ma'am. You are audible. हाँ सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है मैडम। ओके, थैंक यू वेलकम। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बोलिए। जैसा कि आज दिनांक 8 मार्च 2023 आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस उद्घाटन सत्र में महात्मा फूले महाविद्यालय में उपस्थित इस महाविद्यालय के चेयरपर्सन एवं प्राचार्य डॉक्टर बोटके जी का स्वागत एवं अभिनंदन है। साथ ही डॉक्टर बलीराम जी को, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशोलॉजी के हैं, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम अपनी कुछ बातों को आप लोगों के साथ साझा कर पाएं और हम कुछ अपनी बातों को आप लोगों को बता पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करती हूँ। इस प्रोग्राम में जुड़े हमारे सभी स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर महेश, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो, श्रीलंका से हैं, जिनका हम वेलकम करते हैं। रिसोर्स पर्सन के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर गुना शेखरा, AMAS, जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, यूनिवर्सिटीज ऑफ रोहना, जो श्रीलंका से हैं, जिनका हम इस कार्यक्रम में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही में डॉक्टर मनीता कौर, जो मध्य प्रदेश से हैं, और डॉक्टर प्रतिभा जाधव, जो महाराष्ट्र से हैं। आपका भी हम इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में आपका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर प्रभाकर शिवराज स्वामी, जो इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं, उनका इस कार्यक्रम में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी आयोजन समिति को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने का एक बीड़ा उठाया। आज जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उनका भी हम स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी का, जैसा कि आज 8 मार्च है और आज होली का त्योहार भी है, आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों बधाइयां। मैं डॉक्टर विभा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य, ओबरा PG कॉलेज, ओबरा सोनभद्र से हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके उपलक्ष्य में लाइनें आप लोगों से साझा करना चाहेंगे। महिलाओं के लिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। हमें गर्व है कि इस महात्मा फूले महाविद्यालय में हमें अपनी बातों को साझा करने का मौका मिला और हम अपनी कुछ बातों को आपके सामने रख पाए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। महात्मा ज्योतिबा गोविंद राव फूले एक भारतीय समाज सुधारक एवं समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होंने आज महात्मा एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र के सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना एवं फूले ने अब समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल को समाज से मुक्त कराना चाहा। इनका संपूर्ण जीवन स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत रहा। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फूले महिलाओं को स्त्री पुरुष के भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश में पहली पाठशाला पुणे में बनाई। स्त्रियों की ऐसी स्थिति, दयनीय स्थिति को देखकर फूले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्म पत्नी सावित्रीबाई फूले को स्वयं शिक्षा प्रदान की और जैसा कि सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका रही हैं। जैसा कि आज इक्वलिटी जेंडर पे के बारे में हमें बताना है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च एक शुभ अवसर है।
जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है, आप सभी को महिला दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस खास मौके पर दुनिया के हर क्षेत्र में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए उनकी उपलब्धियों को याद किया जाता है। भारत में भी महिला दिवस को खास महत्व दिया जा रहा है। भारत में भी महिला दिवस का खास महत्व है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिला दिवस को मनाने के लिए 8 मार्च ही क्यों चुना गया? क्या ये वाकई कोई समारोह है या कुछ और? तो चलिए इस बारे में कुछ जानकारियां आप लोगों से साझा करते हैं। दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा था। इसका बीजारोपण साल 1908 में हुआ, जब 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकालकर नौकरी में अपने लिए बेहतर वेतन, कम घंटों की मांग की थी और मतदान देने का अधिकार भी मांगा था। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। ये आइडिया एक महिला का ही था। क्लारा जेटकिन ने 1910 में कामकाजी महिलाओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का सुझाव दिया। उस वक्त कॉन्फ्रेंस में 17 देशों की 100 महिलाएं मौजूद थीं। उस समय उन सभी महिलाओं ने उनका समर्थन किया। सबसे पहले साल 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। मगर आज हम 112वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। 1975 में महिला दिवस को अधिकाधिक मान्यता उस वक्त दी गई जब संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक तौर पर इसे एक थीम के साथ मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहली थीम थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। ये सवाल तो आपके जहन में उठता ही होगा कि आखिर 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल क्लारा जेटकिन ने महिला दिवस मनाने की कोई तारीख पक्की नहीं की थी। 1917 में युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी कि खाना और शांति की मांग की थी। महिलाओं की हड़ताल ने वहां के सम्राट निकोलस को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान देने का अधिकार भी प्रदान किया। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर का प्रयोग होता था। जिस दिन महिलाओं ने यह हड़ताल शुरू की वो तारीख 23 फरवरी की थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये तारीख 8 मार्च का था और उसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें तो हम पाते हैं कि आज की तारीख में, आज के समय में महिलाएं पुरुष से बहुत आगे निकल गई हैं। महिलाओं के जब अवसर प्रदान किया गया है तब तब उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया है कि वह पुरुष के बराबर ही नहीं बल्कि अन्य मौकों पर वह उनसे कई गुना बेहतर साबित हुई हैं और विश्व पटल पर महिलाएं नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। अब वह समय नहीं रहा कि जब महिलाएं घर की 4 दीवारी में बंद की जाती थीं। जब महिलाएं हर एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन बेहतर से बेहतर कर रही हैं। भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत पंडित राजा राम मोहन राय ने की थी। उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज को सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने का भरपूर प्रयत्न किया। वर्तमान समय में भारत सरकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने का बहुताधिक प्रयास कर रही है। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु अपनी राष्ट्रीय नीति को गठन किया। महिला सशक्तिकरण नीति को मंजूरी केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2001 को दी। महिला सशक्तिकरण नीति के मुख्य बिंदु के ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालूंगी। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करना। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के शोषण और भेदभाव को समाप्त करना।
महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए ऐसा एक वातावरण तैयार करना जिसमें वह खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, और समाज में महिलाओं के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बराबरी का हिस्सेदारी प्रदान किया जाए। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं और बालिकाओं के प्रति होने वाले आपराधिक मामलों को समाप्त किया जाए एवं कन्या भ्रूण हत्या को भी समाप्त किया जाए। देश में महिला और पुरुष अनुपात को समान अवस्था में लाया जाए। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को शिक्षा प्रदान करना और उन्हें आरक्षण प्रदान करना। जैसा कि प्रत्येक वर्ष हर एक थीम पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो इस वर्ष की थीम का विषय है डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। इस बार की थीम में लैंगिक समानता पर बहुताधिक जोर दिया गया है। लैंगिक समानता के बारे में कहें तो हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का हकदार है, लेकिन उनके जीवन में लैंगिक असमानता और उनके लिए देखभाल करने वालों के जीवन में इस वास्तविकता में बाधा आती है। प्रत्येक बच्चे, चाहे वो बेटी हो या बेटा, उसके समग्र विकास में गतिशीलता होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे के अधिकार है कि उसकी क्षमता के विकास का पूरा मौका मिले, लेकिन लैंगिक असमानता एक ऐसी कुरीति की वजह से वह ठीक तरह से फलीभूत नहीं हो पाता। भारत में लैंगिक असमानता के कारण अवसरों में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि बेटे और बेटियों के बालपन के अनुभव में बहुत अलगाव होता है। यहाँ बेटों और बेटियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता मिलती है, जबकि बेटियों की स्वतंत्रता में अनेक पाबंदियां होती हैं, जिससे उनकी शिक्षा, विवाह और सामाजिक रिश्तों में खुद के निर्णय के अधिकार आदि को प्रभावित करती है। समाज में महिलाओं के महत्व को बढ़ाने के लिए पुरुषों के साथ सभी महिलाओं को निश्चित रूप से मिलकर चलना होगा। समाज की धारणा व सोच को बदलना होगा, तभी एक सशक्त समाज की स्थापना हो पाएगी और देश का विकास हो पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 4 पंक्तियां। स्वयं को पहचान, तुझमें शक्ति अपार है, स्वयं को नमन कर और आगे बढ़ चल, ठोकर मार उसे जो तेरा सम्मान न करना जाने, बढ़ चल, नई राहें तेरा रास्ता देखे हैं, तेरे आंचल में है अपार खुशियां, क्योंकि सिर्फ आज ही नहीं, हर रोज तेरा ही दिन है, हर रोज तेरा ही दिन है। जैसा कि महिलाओं के बारे में कहा गया है कि महिलाओं के बिना जीवन ही नहीं है, इसलिए कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने महिलाओं के सम्मान में कहा है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत कण पग नक्तल में, पीयूष सुदासी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आज देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, उसने अपनी सोच को भी बदल लिया है और उसको कई अधिकार भी मिले हुए हैं, जैसा कि पुरुषों के समान में 2 नारी को अधिकार, पुरुषों के समान 2 नारी को अधिकार, अपने आत्मविश्वास से वो कर देगी चमत्कार। तो आज के इस दौर में महिलाओं को सरकार द्वारा भी और देश में सभी को, सारी महिलाओं को बहुताधिक अधिकार मिले हुए हैं और महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही हैं। मजदूरी से लेकर अंतरिक्ष तक मजदूरी भी करती हैं और अंतरिक्ष में भी जाने तक हर क्षेत्र में वह अपनी योग्यता साबित कर रही हैं। कोरोना जैसी विश्व महामारी में भी स्वास्थ्य, जरूरी सेवाओं, शिक्षा और अन्य भूमिकाओं में भी महिलाओं ने अपना अहम योगदान दिया है। महिलाओं के सम्मान में 2 लाइनें। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। एक बार आप लोगों को फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और होली की बधाइयां। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. You have inaugurated this conference with nice words about the gender equality. The mission has been started by Mahatma Phule and Savitribai Phule. Due to this couple only, now
in India, there are so many girls, they are getting education, and all the women are getting equal rights as men. You have put your very valuable words in front of us, and we are so much thankful to you for giving a nice, wonderful speech on women's equality. Thank you so much, ma'am. Now I would like to request to today's special invitee, Professor Mahmudi Mahesh sir, to talk about the women's gender equality. Sir is working as head Department of Sociology, University of Colombo. Now over to Mr. Mahesh sir. Yeah, thank Hello, you very Mahesh. much. Good Thank morning. you so Can you much. all hear me? Can you all Yes, sir. hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so, okay, I think I want to share a slide. Yeah, it's possible. Okay, I think first and foremost, I must thank Dr. Abdul Khalik for inviting me and introducing me to this international conference. And also, I must be thankful Dr. Bodke, the principal, Mahatma Phale College of Maharashtra, and also other distinguished guests and speakers and the keynote speaker, as well as my colleague and my friend, Dr. Suranjit Gunasekara. Of course, I am a professor in sociology department, not the head of the department. So there is a small correction to be done. So, and also I must say that I make my warm wishes on the Women's Day. And also, I must say that Sri Lanka, I would like to share some of the experience related to Sri Lankan gender equity and equality, but we are in a huge crisis, economic crisis followed by the COVID-19. So gender equity and equity has become another challenge for us. So I will briefly tell you, we know that basically, I didn't get some of the points spoke by the previous speaker because it was made in Hindi. I think she might have done some basic introduction about what is sex and gender. Normally, we know that sex is biologically determined fact, whereas gender is socially, culturally determined. And it is a kind of a cultural production. It is so culturally constructed. So therefore, we know that that could be different from region to region, from place to place. So when it comes to Sri Lanka, we know that Sri Lankan gender issues are different. But I also want to emphasize very importantly, gender means not only something related to women. Yeah, is there any issue with regard to my sounds? Dr. Prabhak? No, sir. No, sir. No, sir. No, Okay. we can Okay, hear you then, properly. I request all the someone. I request your participants, please don't unmute yourself. Sorry. Okay. Yeah, I it's request okay. all the participants. Now we have to clearly understand that gender means not just something related only to women. Gender means that we have to understand even in terms of the men's. So that's a kind of the cultural difference between man and woman. Sometimes even men suffers a lot because of the gender disparity. Now, for example, when it comes to my country in Sri Lanka, we have like a non-communicable disease, especially like a coronary heart disease, heart attacks. 95% of the heart attacks experienced by men because they have unnecessary stress and unnecessary depressions because they can't relieve their stress and depression because of the cultural pressure. Because normally we know that men can't cry, men can't express their grievances in public. So therefore they harbor everything in their mind. So that could be a problem. So on the other hand, men are always exposed to the vulnerability. Now in Sri Lanka, for example, men are very much subject to wildlife attack. And also they are exposed to some war and other issues. So therefore,
gender disparity is not a problem only against women. The disparity is not only a problem against women, even men are experiencing that problem. I'll tell you one more example in Sri Lanka. Sri Lanka is one of the countries having higher rate of suicide. High rate of suicide. Sometimes we experience around minimum of 5,000 suicides. Yeah. 5,000 suicides in Sri Lanka. I think, please, can you please mute your mic? I think otherwise it will be a disturbance for others. So therefore, as I told you, suicide has become a serious social problem in my country. But the problem is, we know that especially men are the 95% of the suicides are coming from men's sides, because the way they communicate their feelings and emotions through the channel of suicide is totally different from the women. So therefore, we have to basically understand that gender equity problems are serious social cultural problem, not only against women, but also against men. So that is why we want to find a solution for these things. Normally, we know that, as I told you, we have to understand gender equity or equality issue through the social constructionism. You know, social constructionism in the sense, the gender difference is always socially constructed. Because when a baby is born, that baby is given different social identity by their culture, family, or religion based on the gender socialization. Sometimes male are born into blue color world, female are born into pink color world. From there onwards, they are brought up in a different way, right? Boys are brought up in a what do you call very different way. I mean, they become more dominant. Girls become more dominated. So even in schools and media, religion, everywhere, this difference is further empowered. Even when it comes to cinema, media, literature. So then this difference is socially constructed. So this is not natural or biological, that we have to understand. Now, we need to have some kind of a strategic structural change to minimize these problems. Now sometimes we know we do have many NGOs and other organizations and social policies and many other rules and regulation, constitutional changes, reforms, but still problems remain unsolved. I think even in India as well as in Sri Lanka. If you go to in India, you have the caste issues and the dowry problems and the family issues, patriarchy, as same as in Sri Lanka. Although Sri Lankan women are experiencing higher literacy rate, Sri Lankan women are experiencing higher literacy rate, more than men. And also they hold some important positions in the administrative service. Still, they are having some problems and some challenges, because we have to identify the strategic issues. I mean, still the real hardline structural problems are not identified, because there is a concept called postmodernism. There is a man called Jacques Derrida. He says, if you want to see the absent, you have to remove the presence. If you want to see the absent, you have to remove the presence. So that means we know that most of the hardcore gender issues are like absent. No one can see them in an apparent way. So you have to explore the real root cause of the gender problem. Real root cause. So then how do we address the cultural component? How do we address some of the traditional thinkings? So then only we can address the real issues. Now you see, I got this picture from the internet. This is not my one. So we have to give the credit to the right person. You see the equality and equity. So we sometimes promote gender equality, but there is no equity.
Equality means we provide everything equal to each person's. But we don't know whether the recipients are having equal number of subsidies or benefits or any other things. This is a good example. You see here, the third man, the smaller man, he can't see the match because we need to give him more and more. So even in the society, we know that we can't equally treat all the women in the society. Now, for example, when it comes to in Sri Lanka, the educated middle-class women are enjoying some privileges and rights, whereas uneducated, low-income, rural-level women in the fishing community or farming community, they have a lot of problems. Now, sometimes Muslim women in Sri Lanka, they have many other issues. So the gender planners, gender policymakers have to seriously think about the equity part. Sometimes we try to promote gender awareness and gender equity and equilibrium or whatever it is among the educated groups sometimes, those who can absorb them. But I think that we need to bring these things right bottom of the society. So there we have to think about what else we can do. So therefore, the equity is very important, gender equity. How far our policies are reaching at the bottom level. Now, for example, when it comes to India, Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Sudra, maybe like I will say Dalits categories. So they need to have more attention, right? So that therefore, even ecofeminist approach have to be redefined. Then only we can address the real root cause of the problem. So then I don't need to explain this part. Now I am moving to because I have been given limited time. Now I am moving to the real scenario of the Sri Lankan society today. Now with these gender equality and equity, we know that sometimes this has become a day-to-day routine. Whenever there is a International Women's Day, people start celebrating, media give some brief working and all that, statements, politicians make statements. But normally when it comes to my country, Sri Lanka, now it's in a huge economic crisis. It has never experienced such an economic crisis in the history because Sri Lankans have been enjoying quite a better life compared to the countries in the region. But due to the corruption, due to the political, financial crimes, and now country has gone into the serious trouble, followed by the COVID pandemic. So whatever it is, now how are we going to look at the situation of the women in our country? We know that still the larger portion of the foreign currency is brought to my country or Sri Lanka by women. I think you won't believe it because Sri Lanka is experiencing a huge crisis of the trade of balance because we don't have enough foreign currencies, dollars and other things, because our imports, our exports are going down. But the only way we are getting foreign currency or foreign remittance, we say foreign remittance, through women's. I will show you. This is a leading sector. Sri Lankan women who are working in the Middle East countries. You know about the Middle East country. I think India doesn't allow, Bangladesh and Pakistan doesn't allow women to be female or labor migrants to Middle East. It was banned, according to my knowledge, but still Sri Lanka and Philippines is practicing this one. Women are there. I think one time it was around 300,000 women, right? Still we have around 200,000 women who are working in the Middle East countries as housemaids. So this is one of the critical area we have to look at, because they sacrifice not only themselves, they sacrifice their family, their children, and they go to the Middle East countries. I am not talking in a scientific way, having all the data and other information. I am generally explaining my observations and other things. So, but these women are having all sort of troubles.
I mean, they are exploited. They are exploited not only sometimes their labor is exploited, sometimes their social life, their sexuality is exploited. So they are therefore, but this is the leading sector through which we get more foreign remittance. But unfortunately, they are not given priority. They are not equally treated sometimes. They are so much marginalized even in our community. The second leading part of the foreign remittance comes to Sri Lanka is through the apparel industry, garment industry. I mean, there are quite a lot of women, in maybe 700,000 to 800,000 women who are working in the apparel industry, irrespective of nationality or regions. So, but they are underpaid. Their freedoms are limited. So they can't do whatever the way they like. So, but still they are not equally treated. Although they brings very important and valuable foreign remittance to rebuild Sri Lanka, but they are not equally treated. So there is a huge gender related equality issue in this sector. I mean, I don't have time to explain one by one in detail. So the third sector, you see, we are having the most leading foreign remittance to Sri Lanka. That is called the plantation sector, especially the tea. Exporting of tea to other countries. Still, Sri Lanka is producing a good quality. But in this sector, although they are, I think, of course, they are Indian origin community, Indian Tamils. So they were brought to Sri Lanka early period of British ruling with the purpose of promoting this tea plantation sector. But we know that now they are not properly equally treated. They are not like sometimes humans. They are, if you go and see their housing, their sanitation, their family life, how they are being, hammered by their husband after having liquor and all that. So this is another worst scenario we have in our country. So therefore, there is an issue. I am not always talking about the negative aspects, and also quite a lot of women are working in the informal sector, in the informal sector, which is very important for the formal function of the formal economy. So we also have to understand the formal economy must rely on the informal sector. Now I am coming to the Sri Lankan. In Sri Lankan family, we know that still women are playing a leading role, whatever the family, maybe especially middle class or lower middle class, women are playing leading role. Sometimes some families are female-headed families, and we know that Sri Lanka experiencing a war for more than 30 years in the north and east. The direct victims of the war is like a women. I don't need to tell you, because whoever dies from both sides, government side or the LTT side, the victims were women because they lost their husbands and their brothers. So they are double victims. They are like a parasite of the parasite. So you see, after the economic crisis, I just want to emphasize that economic crisis has directly impact on the families in Sri Lanka, because the cost of living has doubled. It has gone up. It rocketed up, and all the basic price of the cost of the things are gone up. So then, in a family life, a woman experience quite a difficult time, because they have to manage their domestic part. Especially, they are supposed to be the managers of the house. So there was no electricity for quite a long time. There was an energy crisis. There was a water shortage, food issues. So women, as a group of people who sacrifice their benefits on behalf of others, they happen to face a lot of problems. Still, they are facing. This is the problem.
especially when it comes to the low-income groups or non-elite groups, especially in urban setups, low-income groups, slum groups. I think women are experiencing quite a lot of issues under this economic crisis, because in a family life, you have to finally resort to the material requirement of the family life. Then only you can rotate the love and affection. Although you have a love and affection, if you don't have the material things like a food and other logistic things, you can't run the life. So therefore, this is the one of the worst time Sri Lankan women's in the low-income groups experiencing gender inequality. The other aspect I want to bring you, the power scenario, power dimension, where we have a problem in the gender equality. Although Sri Lankan's universities, I'm working in a university, I know very well that 80%, sometimes 70% of the university students are girls. Even in medical faculties, other faculties, quite a lot of students are girls. But when it comes to the power structure or the power relations of the university community, especially among students or student unions, student movements, I think it is the men, it is the boys. They are having the power. They are holding the power, because there is something wrong with that. Why women are not getting empowered? Right? There is a problem, because even some critical thinkers, they are of the view that women are, marginalized and they are sidelined. That is why the country is in a crisis. Because if we want to bring the country back into the normal situation, we have to empower the role of the women and we have to bring them as leaders. So look at the Parliament of Sri Lanka. 225 seats in Parliament. Only 10 or 12 members become usually our members of the Parliament. So very few. Sometimes even Women Affairs Ministry is given to a man. Look at the cabinet. This is the cabinet of one time. I don't see any single woman in the cabinet of Sri Lanka. Most important decision-making body of the Sri Lanka. All are men. But 50%, 52% of the population is women. So then you can understand in a supreme decision-making level, women are not equally having the power. So therefore, we can't say that is equality in a decision-making process. So personally, I believe that women should be empowered. Women should be given more power in the legislature bodies and administrative bodies. Then only we can finally the cultural aspect. We have in all cultural aspects, maybe Hinduism, Islam, or Buddhism, whatever it is, still traditionally men are holding the power. The patriarch is there because now, for example, the tooth relic, one of the most important religious symbols of Sri Lankan Buddhist tooth relic, the tooth of the Lord Buddha. It is supposed to be the very important thing, and the social organization of the community is centered around that. It was brought to Sri Lanka by a woman, the Princess Hemamala, and she brought it around 2 months' time, and now it is considered to be the holy things of the Sri Lankan community, holy worshipping center of the community. But unfortunately, now Sri Lankan women can't get closer to that. Although it was brought by a woman, and now they are not allowed because of the cultural domination of the men. So therefore, originally in Buddhism, originally in Islam or Hinduism, there may not be a crisis, or there may not be a, inequality against women, but in a practical social life, men are holding the power, controlling the power of the women. So therefore, I say that gender equality culturally constructed based on the political, economic, and other aspect of the community. So that is the key message I want to give you. And if we look at these factors, then we will be able to explore the real root cause of the gender equality and other also the equity issues.
So therefore, thanking you all and enjoying the day of the Women's Day. And hopefully, I must again thanks Dr. Abdul Khalik and others. I'm closing up my speech. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. Really, it was very nice, wonderful, informative session. And you have given gender equality in Sri Lanka's concern. You have talked about gender equality in formal sector and informal sector. We are just talking about gender equality, but we are not doing in our day-to-day life. We have to start gender inequality from us. We have to give rights to the each and every woman to participate in conference, to take education for the working places. Each and every place we need to respect women. Sir, you have given a very nice message on International Women's Day to all the participants that they should give respect to the woman. Once again, I am very much thankful on the behalf of Mahatma Phule College, Kingaon, for accepting our invitation and giving us invaluable speech. Thank you. Thank you so much, sir. Now, I would like to request to Dr. Gunasekhara, sir, Head Department of Sociology, Faculty of Humanity and Social Sciences, University of Ruhana, Matra, Sri Lanka. Okay. Now, over to you, sir. Okay. Welcome, sir. Welcome. Okay, thank you very much. Good Thank you, morning sir. to you all. Yeah. First of all, I must appreciate Dr. Abdul Khalik, who invited me to attend this event, and also chairperson, principals of this Mahatma Phule Mahavidyalaya, and other guests as well. Okay, can we allow to share my PowerPoints? Can I? Just a second, sir. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. Okay, sir. Okay. Okay. Before saying something regarding my topic, gender discrimination and cultural attitudes, why should we need to celebrate International Women's Day? I would like to draw your attention why we need to celebrate International Women's Day. As we know, women and girls around the world they are equally at risk. Women and girls who are living around the world, they are equal position at risk because of unjust laws, human rights violations, gender stereotypes, and societal cultural norms. That's why we need International Women's Day. It's just not the celebrating day for the women. That is not the kind of ritual coming from each and every year. That's what I want to draw you some points, important or significance of celebrating of International Women's Day. One, around the world, just 26 women are serving as world leaders. We know more than half of the global population who are representing women. The women population is higher than the global male population. But look at here, around the world, we have just 26 women leaders. That is one point. Second is 1 in 3 women globally have experienced some form of
some form of sexual assault. 1 in 3 women globally have experienced some form of sexual assault. Third is, there are only 12 countries in the world which offer full legal protection to women and women. There are only 12 countries. At least we have 192 countries which belongs to United Nations. So Nigeria is not on that list. Only there are 12 countries in the world which offer full legal protection to women. Nigeria does not follow that one. My fourth point is here, Nigeria account for third highest number of women and girls who have undergone female genital mutilation, FGM, female genital mutilation. Worldwide, with estimated 19.9 million survivors. Fifth point is here, the gender pay gap still exists. Gender pay gap still exists throughout the world, with women earnings an average of 32 less than men for the same work. Women earnings an average of 32 less than men for the same work. In sixth point of mine is here, in 2023, only 53 of the all Fortune 500 companies have women as CEOs, chief executive officers. We do have more than 500 global companies, mega companies. Only we have 23 chief executive officers only, women's executive officers. Then another point is here, men with disabilities are twice as likely to be employed as women with disability. Again, normally we are marginalized all the disabilities person. But when it's come to the color of women, they are again double marginalized. There is something we have to be addressed. So these are the points what we need to celebrate International Women's Day. It is just not a day to discuss about motherhood, glorifications of women's beauty or something like that. That is more than that. Okay, now let me discuss let me come to my goat. Give me one point, there's something. Okay, sir. No problem. Okay. Something happens. Oh my God. Okay. Yes. Yes, sir. Screen is visible. Okay, now you can see. Yeah, my topic is gender discrimination and cultural attitudes is with with special reference to South Asian context. Okay. I don't want to much say regarding differences between sex and gender, how it's constructed, because of my friend, Professor Muhammad Mahiz. Professor Mahid already spoken regarding on that areas. As he very well pointed out, we know that sex belongs to our physiological conditions or nature, gender purely based on socio-economic cultural context, right? So I don't need to discuss much regarding those concepts, but
you know, cultural construction of gender varies to or difference to society to society. If you go back to that, if you go history, you can see once nursing is not decent job for the women. There was the social opinion. You know, Florence Nightingale, we consider she as the one of the leading character. Her devoted his whole life to that field. But her family did not allow her to take care of the sick persons, because at that time, that society consider that kind of job is not fit for the ladies. Same things happened to first female doctor Elizabeth Blackwell as well. She faced the similar challenges, which she decided to pursue a career in medicine. But today, that scenario has been totally changed, even though still we do have some things, right? Then, okay, this is my point. Why normally we have, what is culture? We all know culture is grammar of the society. Culture gives us to roadmap how we want to live in society. Then gendered attitudes very much closely linked with the culture. South Asian culture we consider as a son's preference culture, or South Asian society we can consider as a son's preference society, especially in Sri Lanka, India, or other countries belongs to South Asia. They prefer to have sons rather than daughters. Why? I think it is because these countries or these societies governed by the patriarchal attitudes, so asymmetrical power institutions. Though, therefore, we would like to have sons rather than daughters. In Indian, there is a famous saying in India, nurturing a girl, that is nurturing a girl child is like caring of a banana plant in the backyard of a neighbor. What is that meaning? What does it mean by? I think you can hear me, Professor. Can you hear me properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, You're audible, sir. okay. Yes, sir. Proceed, There proceed. is one belief in Indian society. I don't know. You can, if I am wrong, you can correct me. There is a saying, famous saying, nurturing a girl child is like caring for a banana plant in the backyard of a next door neighbor. Why? What is the meaning of this saying? If we have a girl, if we grow up, if we give protection to caring to girl, one day she need to leave from us. She belong, sorry. Okay, they have to leave from the home. Normally, that is the way in Sri Lanka as well. We think they belongs to outsiders, not the inside of the family, because in Sri Lankan context, removable properties sometimes we can give our daughters, but non-removable properties we don't need to. Usually we are not going to give
the daughters, Mahagedara, like, that is the that kind of things. Then in Indian context as well, we can see the same attitudes towards daughters or women. That is a culture. That is based on culture. What culture? That is patriarchal cultural attitudes of South Asia. Then you think about, normally in Sri Lankan context, we like to find out, especially in Buddhist context, we like to find out girls like Visakha model or Sita Devi model. That kind of role model. That is the role model of girls. Girls should be like that. We think normally female attitudes towards girls, boys' attitudes towards girls, girls should be like Visakha or Sita Devi. Why? Again, we have men can go anywhere. I don't know Indian context really, but in Sri Lankan context, men are free to go to anywhere before marriage. They can have several relationships with girls or ladies. But when it's come to the time of marriage, we will try to look after sexual purity. I don't know whether Indian context is different to the Sri Lankan context. That's why that Sri Lankan, as I said at the beginning of this discussion or lecture, our society governed by the patriarchal value system. That is mostly dominant. Here also dominant, male domination also here as well. So that's what I also guess Indian society, male, they try to, they would like to have Sita, the role model like Sita Devi. They believe, they want to, ladies want to be like Sita Devi. The same as in Sri Lanka. If I am not right, please correct me. When it's come to that, that's what I said, South Asian society, we can consider to be as sons preference society. And also, when you look at sometimes women like mobile prisoners, cultural mobile, they have to be a cultural mobile prisoners. They cannot choose what they want. Dress from the dress to other selections. They cannot do their own way. If you go to Afghanistan, you can see what Afghanistan women now they are, how they behave like. So that's what I need. Culture. There are some places we can see the cultural prisons, especially with in relations to women. And also some, religious attitudes, cultural religious attitudes work against basic rights of women throughout the world, not only South Asian context. One among them is genital mutilation of female. Right. Then now I want to draw your attentions nature of gender discrimination. Why we can have
gender discrimination is still today. We are talking about human rights, fundamental rights, democratic system, but still we do have gender discriminations. As my friend Professor Mais told, okay, gender is not only belongs to women's right, but when it's come to the asymmetrical power relations, male and female, men are the dominant rather than women, and also societal power based on masculine qualities rather than feminine colors. As you see, I choose pink color as well as blue color. My friends told to us, oh yeah, male baby boys, male's world belongs to blue, and same way around, pink color belongs to girls or women's world, but that is relatively less, that has less power, right? So now I want to draw your attention to nature of gender discrimination. First one, this is color. Color is itself not innocent. Color has some color represents some political aspect as well. Then when it's come to gender politics, blue and pinks are not innocent, because women are subjected to discrimination even before they are born. Women are subjected to discrimination even before they are born. How it's happened? We are living in a modern world. We called ourselves as civilized persons, but you know how many female politicide and infanticides are happening right now as well. That is, we can consider horrifying or cruel crimes against women. You know, why it's happened? Because of they are women. They are ladies, baby girls. So female politicide and infanticide is, you know, it is kind of crime against humanity. Still, we are facing that grave human right violations today as well. It is not easy one. That's what we need to celebrate International Women's Day, to end this kind of human right violations. Normally people thinks, NGO people thinks, okay, this is some ladies who are from middle class representing, they think, okay, this day for us to celebrate, to wear our rights. What kind of rights? Like, you know, they are as a mother, as a, like that way. They are enjoying that way their rights. They are celebrating women's rights to gain such middle class values. I personally think, but that is not much at that much simple day, because we want to end up this kind of crime against humanity, but it is happening today as well, as I said. And also, then why activities like domestic violence, raping, so and so, that kind of activities are happening? Again, that is, you know, we are thinking women's are, you know, relatively less power, as well as they are secondary citizen of this country. We don't have much respect, or we don't want to accept they have equal rights like as us. So that's what
we are facing domestic and other forms of violence against women. Every part of the country, irrespective of class, education, professions, gender, caste, whatever the social boundary, irrespective of any kind of social boundaries, they have to face some kind of violence. This is happening every corner of the world. Then I would like to discuss about, you have given very limited time. So can I get another 5 minutes, Professor? Yes, You sir. Yes. allow me? Yes, sir. Okay. Yes. Okay, now I would like to discuss about sources related to gender discriminations. What we all know why gender discrimination happening in this society is happening in this society. There are some sources or factors behind that phenomenon. One is traditional values. Normally, South Asian society, we do follow the traditions. In a Buddhist context, we think female cannot be to reach the enlightenment. We think like that. Only men can do that. As my friend Muhammad Mahis told us, sacred place, temple of Tooth Relic, located in Kandy, bought by one lady from India. Now, but they cannot, some places are there, women cannot be visited. Traditional values, we think they are opportunistic. If they have time, if they have place, they can do whatever they want to do. They are free to, if they are free, because then we have that kind of traditional, rigid societal values because of our history or culture or religions. Then low literacy, also one of major cause to gender discrimination. My friend pointed out on Sri Lankan context, women literacy rate is higher than male. But when it's come to another context, even Sri Lanka, do we have we do practice gender discrimination? But when it's come to another places like India or Bangladesh, we can see low literacy rate among the women. That is also kind of societal drivers to create gender discrimination. I personally believe that. As Professor Mahis said, Sri Lankan economy, you see, Sri Lankan economy is a women-driven economy. They are the key pillars of our economy. Migrate to Middle East, women who are migrate to Middle East, they send, foreign remittance to us. Girls who are involved in apparel industry, they bring some foreign remittance to us. The ladies who are working in the plantation sector of this country, they give their sweater to make our economy strong. But normally we have a mentality, they are easy go. They are we consider them as a sex objects. They are suffering from other social, economic
rights, deprivation of social rights as well. They are not much enjoy middle class ladies or what they are enjoying in this society. They are not enjoying like rights belongs to them. But normally societal mentality we do have here is, and they are like sex objects. You can easily get relationship with them. At least we don't want to consider them as a human being, full human beings, equal human beings. It means that they have lack of social recognition. This low literacy, I am talking about low literacy, but as a women-driven economic like Sri Lanka, we are marginalized women in that way as well. Then we can see heavier housekeeping duties. You know, what are the ladies, women's housekeeping workings, but we think that is women works, that is feminine works, that is not masculine work or female work. We normally we have clear demarcation regarding housekeeping duties as well as other public spheres duties. And also lack of knowledge. Women sometimes does not know about their rights. They are not much aware of their rights. That is also cause for gender discrimination, especially in this region. Okay, low mobility. They don't have much, you know, they have to be family bounded. So they don't get much chance to have, you know, see the open world. But sometimes it's, nowadays it's getting a little bit changed that scenario, but it's still, you know, our majority of population who are living in rural areas. That is true for the India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bhutan. We cannot see much urban population. Then women who are in rural areas getting more, you know, troubles because of gender discrimination. It doesn't mean that urban women, they are not facing gender discrimination, but compared to them, rural women still have more issues related to gender discrimination. Lack of confidence, familial discouragement, modern science and technology also are cause for the gender discrimination. You think how modern science and technology helps to have a cause, helps to gender discrimination. You think about how we can see this is girl, boy, or girl, child, or baby, baby, boy or girl from womb. Using modern science and technological knowledge, we can do crime against humanity, especially gender discrimination. These are the things I want to draw your attention. Still, we do practice gender discrimination. It is very much related with our cultural attitudes. If we want to way out, or if you want to change, transform this scenario in towards better recognition for women in this region, we must want to change our cultural attitudes. Culture, we know that as a phenomenon, it always been subjected to change, but
we don't need, sometimes we don't need to change culture. We try to pursue culture as a sacred things. Culture is, I personally believe culture is not like that. Culture, we have some negative, inhumane cultural practices that must be changed. Okay, thank you very much. Thank you so much, sir, for giving us your valuable thoughts on gender discrimination and cultural attitudes. While in your presentation, you have shown that the nature of gender discrimination, women are subject to discrimination even before they born. I would like to quote here the opening line of Simone de Beauvoir's The Second Sex. No one is born as a woman, but they become rather a woman. It means before taking a birth, we are starting gender discrimination. Thank you so much, sir, for giving your valuable speech about sources of gender discrimination. Now, I would like to invite Dr. Pratibha Jadhav ma'am to give a light on gender equality. Dr. Pratibha Jadhav ma'am. Hi, yes ma'am. हॅलो Yes. हॅलो हा बोला मॅडम. मांडणी करायला सुरुवात करायची आहे हा हा बोला. हो. का सगळ्यात आधी महिला दिनाच्या सगळ्यांना मी शुभेच्छा देते आणि आज या जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं आज आपल्या महाविद्यालयानं जो काही आंतरविद्याशास्त्रीय आंतरराष्ट्रीय असं एक परिषद आयोजित केलेली आहे. या परिषदेचे संयोजक प्राचार्य आपलं सगळ्या भाषेत झालं. स्वामी, त्यानंतर समन्वयक बळीराम पवार सर, ICSE कोऑर्डिनेटर, या सगळ्यांचे मी आभार मानते की मला इथे मांडणीसाठी आपण निमंत्रित केलेलं आहे. सगळ्यात आधी इथे जी मांडणी झाली ती मला काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे ऐकू आलेली नाहीये. तर आधीच मला फक्त स्लाइड दिसले आहेत, त्याच्यावरून मी एक अंदाज बांधते की खूप छान पद्धतीने ही मांडणी झालेली आहे. पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन प्रचंड प्रभावी असं झालेले आहे. तर आपल्याला महिला दिनाची पार्श्वभूमी त्यातून काही प्रमाणात कळालेली आहे की संपूर्ण अमेरिका, युरोपसह जवळजवळ जगभरातल्या स्त्रियांना सुरुवातीपासून मतदानाचा हक्क नाकारलेला होता. स्त्री पुरुष विषमतेचे ठसठशीत उदाहरण आहे. म्हणजे हे भारतातच नव्हे तर हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होतं, परंतु भारताचे अधिक योगदान आहे होतं आणि भावी काळात त्यात बदल व्हावा असा वाद या मंचावर व्यक्त करते. आपल्याकडे जेंडर इक्वॅलिटी म्हणजे लिंग समानता या मुद्द्यावर पवार सर तिथे कोणीतरी बोलतंय, प्लीज मला इकडे दिसतं, तिकडे कोणीतरी बोलतंय थोडं. ओके ओके बोला. तर आपल्याकडे लिंग समानता या विषयावर, या मुद्द्यावर आजही आपल्याला परिसंवाद सेमिनार घ्यावे लागतायत. हीच प्रचंड दुर्दैवी आहे. कारण आज आपण भारताच्या स्वातंत्र्याची सुवर्ण अमृत महोत्सवी वर्ष आपण साजरं केलेलं आहे. अमृत काल असं म्हणतो आपण त्यात. पण आज स्त्रिया कुठे आहेत त्याच्यात? काय आहे स्त्रियांचं स्थान? काय दर्जा दिला जातो? म्हणजे मला एक मोठ्या प्रमाणात ते खंत किंवा दुःख वाटतं या गोष्टीचं की आजही स्त्रीकडे पाहण्याची दृष्टी तीच बुरसटलेली आहे. म्हणजे बाह्यांगाने आपण सगळे बदललेलो आहोत. आपण खूप ब्रँडेड कपडे, मोबाईल, शूज हे सगळं वापरतो. अनेक भौतिक सुविधा आहेत आपल्या ज्या ब्रँडेड आपण वापरतो, परंतु अजूनही बाईच्या बाबतीतले विचार आपले ब्रँडेड झालेले नाहीये. म्हणजे इथे सातत्याने महिला सबलीकरणासाठी काम करावं लागतं आहे, परंतु ज्या घटकामुळे स्त्रियांना हा सगळा त्रास सहन करावा लागतो आहे
किंवा ती शोषण व्यवस्था अधिकाधिक बळकट होऊ लागलेली आहे. ही कुणामुळे होते आहे, ती रिझन त्याच्या पाळामुळांपर्यंत, मूलभूत गोष्टींपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे मला असं वाटतं. म्हणजे बघा, साधं उदाहरण देते मी, की बाईला आजही तिच्या संरक्षणासाठी जर कराटे शिकावे लागत असतील, ते चांगली गोष्ट आहे. जुडो कराटे ती शिकते, अगदी चांगली गोष्ट आहे. पण तिला हा जुडो कराटे का शिकावे लागताय? स्वसंरक्षण हा हेतूने शिकावे लागत असतील. तिच्या पर्समध्ये तिला आजही मिरची पूड घेऊन फिरावं लागत असेल. एखादं धारदार शस्त्र जर आपत्कालीन तिच्यावर कधी हल्ला झाला तर तिला ते लागत असेल. तर समाज म्हणून आपली हार आहे, आपला पराभव आहे, आपला पराजय आहे असं मी मानते. मुळात इथं पुरुषांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्याचा माझा मानस नाही. इथली जात पितृसत्ताक जी पद्धती आहे, इथली जी जात पितृसत्ताक पद्धती आहे ती इतकी बळकट आहे आणि तिचा इतका प्रचंड पगडा आपल्या जनमानसावर आहे की आजही त्याच चष्म्यातून आपण भोवताल पाहतो, स्त्रियांकडे पाहतो. म्हणजे आज तिने कितीही मोठ्या पातळीवर, स्तरावर, स्थानावर, पदावर स्वतःला सिद्ध केलं असेल तरीही आज ती बाई आहे, ती वादी आहे, ती उपभोगाची वस्तू आहे आणि बाई म्हणजे काहीतरी कमी आहे, क्षुल्लक आहे, ती आपली बरोबरी करू शकत नाही किंवा ती दुय्यमच आहे, सेकंड सेक्स म्हणून मिळवलं जातं तिला. म्हणून सीमांत पोवार त्यांच्या सेकंड सेक्स या पुस्तकात म्हणतात की बाई जन्माला येत नाही, बाई घडवली जाते. आणि आपण दुसऱ्या अंगाने पण हा विचार केला पाहिजे की जात पितृसत्ताक पद्धतीने ज्या पद्धतीने बाईचं शोषण केलेलं आहे त्याच प्रमाणात, काही प्रमाणात, तेवढ्या नाही, काही प्रमाणामध्ये पुरुषावरही थोडा अन्याय झालेला आहे. म्हणजे लहानपणापासून, अगदी बालपणापासून आपल्यावर घर, शाळा आणि समाज हे मोठ्या प्रमाणात प्रभाव टाकत असतं आणि इथे सातत्याने बिंबवलं जातं आपली व्यवस्था कशी आहे, यंत्रणा कशी आहे. व्यवस्था नाही म्हणूया आपण त्याला, नको म्हणूया, आपण त्याला अव्यवस्था म्हणूया. व्यवस्था म्हणजे काय, जी सगळी व्यवस्थित असते ती, परंतु आपली व्यवस्था व्यवस्थित नाहीये. म्हणून तर आजही अशा कार्यक्रम घ्यावे लागतात ना. अव्यवस्था जी आहे आपली, त्या अव्यवस्थेमध्ये अशी तजवीज करण्यात आलेली आहे, सतत हॅमरिंग केलं जातं. बाई, मुलगी जन्माला आली, मुलगा जन्माला आला, घरातलं बाळ जन्माला आलं तर त्या लिंगामध्ये कसं बंदिस्त करता येईल त्याचं वागणं, जगणं, जडणघडण या प्रति प्रयत्नशील असतो इथला प्रत्येक माणूस. घराघरात हीच परिस्थिती आहे. आता कुठे बदलत असेल तर आश्वस्त होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होईल असं म्हणते, पण 100% तेही नाही लिहून ते किंबहुना 50% बदल झालेला नाही. म्हणजे लहानपणापासून बिंबवलं जातं की तू बाई आहेस, तू बाई आहेस, मोठ्याने बोलायचं नाही, असं चालायचं नाही, तसे कपडे घालायचे नाही, वगैरे वगैरे. आणि मुलाला पण सातत्याने हे बिंबवलं जातं की तू मुलगी आहेस का मुळमुळ रडायला, अमुक एक रंग तू वापरायचा नाही, तो मुलींचा रंग आहे. हा, त्याच्यानंतर मुलगा आहे, बाप्या आहेत, मर्द आहे, या गड्यासारखं तू वागायला पाहिजे. म्हणजे त्याची भावना काय आहे, त्याला काय वाटते, म्हणजे व्यक्तीला स्वातंत्र्य पाहिजे ना, ती व्यक्ती आहे या चष्म्यातून आपण पाहत नाही. तर म्हणजे जत्रा यात्रेत सुद्धा आपण जेव्हा मुलांना घेऊन जातो तेव्हा इतकं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे हे बिंबवतो की तू बाई आहेस आणि तुझं विश्व हे एवढंच आहे. म्हणजे तिला घेऊन दिली जाणारी जी खेळणी असते ना, बघा, क्षुल्लक गोष्ट आहे, तुम्ही मी आपल्या बरोबर पण घडलं असेल, आपण आपल्या मुलांबरोबर असं वागले असतो कदाचित की तिला घेऊन दिलेल्या ज्या काही वस्तू किंवा खेळणी आहे ना ती स्त्री सुलभ. म्हणजे तिला कधी मोबाईल, मोपेड, तिला कधी जेसीबी, जीप, ट्रक असं घेऊन दिलेलं मजा ऐकिवात नाही किंवा पाहण्यात नाही. पण तिला काय वस्तू घेऊन दिल्या जातात तर तिला भातुकलीचा खेळ घेऊन दिला जातो, तिला सौंदर्य प्रसाधनांची साधनं घेऊन दिली जातात, त्याच्यानंतर तिला बाहुली घेऊन दिली जाते आणि हे विश्व आहे. पण एखादी मुलगी तिला काहीतरी तिच्या हातात वेगळी वस्तू द्यावी जी समतेचा उद्घोष करेल, असं काही आपण तिच्या मनात वेगळं बीज पेरलं जाईल लहानपणापासून, असं काही आपण करतो का? तर असं होत नाही. तर ही मोठी इथल्या जी काही पितृसत्ताक पद्धती आहे ना, त्याचे खूप प्रचंड पगडा आपल्याला दिसून येतो, अगदी किरकोळ गोष्टींमधून दिसून येतो. म्हणजे आपल्याकडे मुलींसाठी नियम असतात, सातच्या घरात तो आली पाहिजे, परंतु जर ती घराबाहेर राहिली तर ती कुणामुळे धोक्यात येऊ शकते, त्या घटकावर पण नियंत्रण लावणं गरजेचं आहे ना, नियंत्रण ठेवणं गरजेचं आहे ना.
म्हणजे आजही मुलींना घराबाहेर पडताना, मी ग्रामीण भागात शिकवते आणि मीही याच गोष्टींमधून गेलेली आहे, ही माझी अनुभूती आहे की घरातून मुलगी जेव्हा बाहेर पडते शाळा कॉलेजमध्ये जायला, तेव्हा घरातून तिला दंडी मिळते, सरळ जायचं, सरळ यायचं, नाकासमोर चालायचं. परंतु अशाच सूचना, बघा शुल्लक गोष्ट आहे, अशा सूचना मुलांसाठी दिलेल्या माझ्या ऐकिवात नाही. म्हणजे माझ्या कुटुंबाचे काही पुरुष होते, भाऊ होते, त्यांना अशा सूचना घरातल्यांकडून मिळालेल्या माझ्या ऐकिवात नाही. म्हणजे ही इतकी पितृसत्ताक पद्धती किती खोलवर रुजलेली आहे इथं. तर आणि इथं या पितृसत्ताक पद्धतीमुळे ही खरं तर ही दूर झाली पाहिजे. करणारी स्त्री या समाजात, म्हणजे इथल्या व्यवस्थेविरोधात बोलणारी स्त्री कधीही इथल्या व्यवस्थेला आवडलेली नाहीये. कारण इथली व्यवस्था आहे जी संस्कृती संस्काराच्या म्हणजे फार ग्लोरिफिकेशन होते. आणि या इथली जे काही धर्म आहेत तेवढे, त्या धर्मांचे धर्मगुरु सगळे पुरुष आहेत. हे धर्मग्रंथ ज्यांनी लिहिले आहेत ते सगळे पुरुष आहेत. आणि धर्मग्रंथ लिहिणारा पुरुष आहे, तिथले धर्मगुरु पुरुष आहे. त्यांनी स्वतःच्या सोयीने ह्या सगळ्या रचना केलेल्या आहेत. बाईच्या हिताचं ते कसं लिहिलं, म्हणजे तुम्ही ते काही इथले धर्म आहेत, धर्मग्रंथ आहेत आणि धर्मगुरु आहेत. तर बाईच्या सोयीचा इतिहास कसे लिहितील, ते स्वतःच्या सोयीचा इतिहास लिहितील. म्हणजे मनुस्मृतीचं उदाहरण घ्या, मनुस्मृतीचं उदाहरण घेतलं तर त्यात आहे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, आणि शेवटी लिहिलंय न स्त्री स्वातंत्र्य मर्यादी. किंवा तुलसी रामायणामध्ये लिहिलंय ढोर पशु नारी सब तारण के अधिकारी. म्हणजे बाई म्हणजे दुय्यमच, पैर की ज्योती पैर में रहनी चाहिए, ही मानसिकता आहे, ती भयंकर आहे. हा जो काही आपला म्हणून ना वर्चस्ववाद आहे, हा कल्चरल हेजिमनी ज्याला आपण म्हणतो, सांस्कृतिक वर्चस्ववाद आहे हा. आणि या सगळ्या वर्चस्ववादामध्ये बाईची बुद्धी आणि मेंदू इतका बंद पाडला या लोकांनी, हॅमरिंग करून सगळं तू स्त्री आहे, तू बाई आहे, तू असंच वागलं पाहिजे. हे नियम करणारे कोण होते? हे नियम स्वतःच्या हिताचे करणारे कोण होते? हा हा विचार आपण का करत नाही? आणि खरं सांगू का, आज जी पद्धती जी प्रकार जो आहे ना, बायका अधिक पितृसत्ताक पद्धतीचं समर्थन बायकाच करतात, याच्यासारखी दुसरी वाईट दुर्दैवी शोकांतिका कुठेच नाही. काय झालंय, युगानुग बाईच्या मनावर बिंबवलं गेलं ते संस्कृती जतन म्हणजे बाईचं आद्य कर्तव्य आहे. दैव दैवत व्रत वैकल्य उपास तापास उद्यापन पोथ्या पुराण हे सगळं बाईच्या पदरीत टाकलं त्या पितृसत्ताक पद्धतीनं. आणि बाईला कळालंच नाही ती कधी गुलाम झाली या गोष्टींची. आता आमच्यासारखी एखादी बाई जी मेंदू आहे आपल्याकडे, त्याचा विचार करते, ती विचार करून व्यक्त होते, ती अभ्यास करते, ती चिकित्सा करते, विश्लेषण करते आणि या बायकांना पटवून देते की बाई तुला या पितृसत्ताक पद्धतीने गुलाम केलंय, तू कशासाठी काय करते, हे सगळे उपास तपास करते, याच्यामागे लॉजिक काय आहे, याच्यामागे तर्कवाद कोणता आहे, त्याच्याने तुझं काय भलं होणार आहे. या पोथ्या पुराण वाचण्यापेक्षा तू जर आता अभ्यासाची पुस्तकं वाचली असती तर कदाचित तुझ्या नाव पुढे डॉक्टर बिक्टर लागलं असतं, एमफिल झालं असतं, तुझ्या पुढे पदव्युत्तर पदवी पास काहीतरी लागलं असतं. परंतु आपण या बायकांना त्यांचा विकासच होणार नाही, बौद्धिक प्रगती होणार नाही, वैचारिक विकास होणार नाही, अशा पद्धतीनं बायकांना या सगळ्या चौकटीत बंदिस्त केलं आहे. आणि बाया त्याच्या पुढचा विचारच करू शकत नाही. म्हणजे कालच आम्ही एका वाहिनीवर महिला दिनानिमित्त एक चर्चासत्र झालं 4 महिलांचं, एका वाहिनीवर असते मॅक्स महाराष्ट्र सारख्या, आणि आज ते चरित असतोय, तिथेही हाच इश्यू होता, हाच मुद्दा होता की बायला काय करावं लागेल, महिलांना मुक्तीचा अवकाश अजून प्राप्त झालेला नाही तर आपल्याला काय करावं लागेल. तर बाईला सगळ्यात आधी बंडखोरी करावी लागेल. पण बंडखोर बाई या व्यवस्थेला आवडत नाही. का आवडत नाही याचं विश्लेषण करण्याची कुवत तिची आहे का, तर तिची कुवत तेवढी ठेवलेलीच नाहीये. तिला इतक्या वाईट पद्धतीने मानसिक गुलाम या व्यवस्थेने केलेला आहे, अव्यवस्थेने केलेला आहे. रवींद्र कुवर यांच्या खूप सुंदर ओळी आहेत, 2 मला आवडतात. मी त्या ओळींवर खूप प्रेम करते. खरं तर त्या बाईच्या बाजूने आहे आणि विशेष प्रेम करण्याचं त्या ओळींवर एक कारण असं की त्या एका पुरुषाने दिले आहे. त्या ओळी अशा आहेत की औरतें बहुत अच्छी होती है, औरतें बहुत अच्छी होती है जब वो हाँ में हाँ मिलाती है, औरतें बहुत अच्छी होती है जब वो हाँ में हाँ मिलाती है, औरतें बहुत बुरी होती है जब वो सोचने लगती है, समझने लगती है और खड़ा होकर बोलने लगती है. आम्हाला इथे बोलणारी भूमिका घेऊन लढणारी बाई कधीच आवडलेली नाहीये. बरं, हे एक
हे पुरुषांच्या विरोधात बोलणं नाहीये, हे पितृसत्ताक पद्धती विरोधात बोलणं आहे. तर मी त्यासाठी असं म्हणेन की स्त्री सबलीकरणासाठी, स्त्री कल्याणासाठी इथे लढणारे पुरुष होते, सगळ्यात आधी लढणारे पुरुष होते हे आपण विसरून चालणार नाही. हे कोणते पुरुष होते? हे स्त्रीवादी पुरुष होते. मुळात पुरुषोत्तमाची व्याख्या अशीच केली जाते, खरा पुरुषोत्तम तो की जो स्त्रीवादी असतो. कारण तो स्त्रीच्या बाई म्हणून वादी, स्त्री मुलगी म्हणून विचार न करता व्यक्ती मानव म्हणून विचार करतो. पुरुष असण्याचा सुखाचा अभिमान हा उन्माद त्याला असतो. पण भारतीय समाजामध्ये ही भेदभावाची जाणीव कुठून आली? तर माणूस विचार करू लागला तसं तो तिला दुय्यम समजू लागला. खरं तर तुम्हाला सांगते की इथल्या जी शेती व्यवस्थेची शेतीचा शोध आहे, तुम्हाला माहिती असेल की शेतीचा शोध महिलांनी लावलाय, बाईनं लावलाय. ती जेव्हा गर्भार असायची तेव्हा त्या गुहेच्या आधी मानव काळामध्ये त्या गुहेच्या दाराशी ती बसायची आणि ती फळं खाल्ल्यानंतर ती फळांच्या बिया मातीत टाकायची. त्या मातीत रुजल्या, पाऊस पडला की त्याच्यातून अंकुर येतो. त्या अंकुराचं रोप होतं, त्या रोपाचं झाड होतं, त्याचं झाड झालं की त्याला फुलं येतात. फुलं आल्यानंतर त्याला फळं येतात. हे तिला कळालं आणि मग शेतीचा शोध बाईनं लावला. परंतु तिथल्या पितृसत्ताक पद्धतीने काय केलं, त्या पुरुषांनी काय केलं, तो पगडा असणाऱ्या बाईचं जमिनीच्या सातबाऱ्यावरून नावच मिटवून टाकलं. आजही किती टक्के कुटुंबाच्या सातबाऱ्यावर बाईचं नाव आहे याचा जरा आपण अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे, शोध घेतला पाहिजे. म्हणजे मला इथे ऐकणाऱ्या श्रोत्यांनी विचार करावा की तुमच्या घराच्या जमिनीच्या शेताच्या सातबाऱ्यावर बाईचं नाव आपल्या घरातल्या महिलांना ते सगळं आहे. म्हणजे सुरुवातीला म्हणायचं की जिथे बाईचा आदर केला जातो, सन्मान केला जातो, तिथे देवही रमतात आणि शेवटी म्हणायचं की न स्वातंत्र्य स्त्री मराठी. म्हणजे किती दुटप्पी धोरण आहे हे बाईकडे बघण्याचं, किती दांभिकपणा आहे बाईकडे बघण्याचा. आता स्त्रियांनी काय केलं पाहिजे याच्या प्रती मी काही सांगू इच्छिते की स्त्रियांनी ह्या मानसिक गुलामीतून बाहेर निघण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं शस्त्र जे आहे ते फुले शाहू आंबेडकरांनी सांगितलं, जे सावित्रीबाईंनी सांगितलं, जे रमाबाईंनी सांगितलं, जे कर्वेंनी सांगितलं, ते बाईनं सक्षम झालं पाहिजे. आणि बाई कर्मवीरांनी तेच सांगितलं, बाईनं शिक्षण घेतलं पाहिजे आधी. कारण शिक्षण घेऊन माणसाला सुख बरोबर कळू लागतं, भलं बुरं कळू लागतं, चांगलं वाईट कळू लागतं, माणूस विश्लेषण करू लागतो, माणूस चिकित्सा करू लागतो. परंतु इथे या पाखंड्यांनी, दांभिक आणि पितृसत्ताक पद्धतीतल्या लोकांनी बाईला चिकित्सेचा अधिकार दिला नाही. त्यानंतर धर्माची चिकित्सा तर करूच नाही. बघा इथे जेव्हा जेव्हा लढे झाले आहेत, युद्ध झालेले आहेत, धार्मिक काही अडचणी घडणा प्रसंग घडलेले आहेत, सामाजिक सांस्कृतिक वाद झालेले आहेत, त्या सगळ्यामध्ये सगळ्यात आधी जी चिरडली जाते, जी पोळली जाते, जी भाजली जाते, तिचं शोषण होतं, ती असते स्त्री. मग स्त्रीने हे सगळं जे ग्लोरिफिकेशन आहे ना की संस्कृती, परंपरा, प्रथा, हे जे आहे ना, तिने जे आपल्या मागे यांनी लादलं आणि तिने अशी इमाने ती पुढे नेते, तर त्याची चिकित्सा एका टप्प्यावर केली पाहिजे ना. म्हणजे साधी गोष्ट आहे, हरतालिका, वटसावित्री सारखे जे आहेत म्हणजे पुरुष केंद्रस्थानी ठेवून आपल्या सगळ्या धर्मांची, व्रतवैकल्यांची रचना गेलेली तुम्हाला दिसते. म्हणजे मला पाहण्यात नाही आणि मला ऐकणाऱ्या लोकांनी पण विचार करावा की बाईला केंद्रस्थानी ठेवून बाईसाठी कोणते व्रतवैकल्य आहेत का, कोणते उपास तापास आहेत का. म्हणजे इथे हरतालिका होते, तीही पुरुषाला केंद्रस्थानी ठेवून साजरी केली जाते. इथे वटसावित्री होते, तीही पुरुषासाठी होते, त्याला दीर्घायू लाभावी म्हणून होते, जन्मोजन्मी हाच पती मिळावा म्हणून होते. परंतु आता कोणत्या पूजा व्रतवैकल्य आहे की बाईवर लादले गेलेली नाहीये, की बाईसाठी होतात असं काय आहे. पण बाईचं पण काय चुकलंय, बाईने याचं सगळ्यांचं उत्सवात रूपांतर केलं. म्हणजे कुठला तरी वृत्तपत्र ते चालत नाही म्हणून तो वृत्तपत्र म्हणतो की नवरात्रात 9 दिवस
9 वेगळ्या रंगांच्या साड्या घाला आणि आमच्याकडे त्याचे फोटो पाठवा, आम्ही ते छापू, बाया हरतात, बाया नटतात, थटतात, त्यात अधिक वेळ घालतात. 9 दिवसांची ठीक आहे, त्यांना आवडत असेल तर ते खरं तर डोक्याच्या वापराचा हा मला वाटतं शिक्षण आणि तुमचं जगणं वागणं, डोक्याचा वापर, मेंदूचा वापर, विचार काय आहे तुमचे, याच्याशी संबंधित विषय आहेत हे सगळे. पण आम्ही विचारच करत नाही ना. मग काय झालंय, 9 दिवस 9 रंगांच्या साड्या घालून आम्ही फोटो काढतो, आम्ही वृत्तपत्रांना पाठवतो, पण माझ्यासारखी बाई असा विचार करते की कोणी कसं कंट्रोल करू शकतं मला, मी आज काय ल्यावं, काय नेसावं, हे किती चुकीचं आहे. म्हणजे माझ्यासारख्या बाईला त्या नवरात्रांमध्ये हे नवरात्रीत हे बघून बाहेर पडावं लागतं की आज कोणता रंग आहे तो मला नेसायला नकोय, तो आज मला परिधान करायला नकोय. म्हणजे किती छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, हे सगळं जाणं आहे. या पितृसत्ताक पद्धतीनं बिनलेलं हे सगळं जाळं आहे आणि आपण त्यात अलगद अलगद अडकत जातो. बाईनं सजग होत आहे. उपास तापास करून होणारा प्रकृतीवर होणारा त्रास आहे किंवा बटाटे आणि साबुदाणे खाऊन जे बधिरत्व येतं ते बधिरीकरण झालेलं आहे. शरीरामध्ये येणारं तौल्य आहे, उदास आळशीपणा आहे, छोट्या छोट्या गोष्टी, पण ह्या बायकांना कळायला पाहिजे की आपण काय करतो. तर मला असं वाटतं की महिला दिन फक्त इव्हेंट होता कामा नये, उत्सव होता कामा नये. म्हणजे एक दिवशी सगळ्यांनी समाजाने तिच्या प्रती आदर व्यक्त करायचा, 364 दिवस मात्र तिची मानहानी करायची, एकमेकांना शिव्या देताना पण बघा ना, बायांच्या इंद्रियांचा उद्धार करणारे शिव्या आहेत आपल्याकडे. पुरुषाच्या इंद्रियाचा उद्धार व्हावा असं म्हणत नाहीये मी, पण आपल्या इच्छात शिव्या पण बघा कशा आहेत, अपशब्द जे वापरले जातात तेही बायकांचा उद्धार करणारे आहेत. म्हणजे इथे जे जे दुष्णावं आहे ते बाईसाठी आणि जे जे दुष्णावं आहे ते पुरुषासाठी. ही रचना करणारं कोण आहे, हा इतिहास निर्माण करणारं कोण आहे, या गोष्टींचा आपण विचार करत नाही आहोत. बाईनं बंडखोर झालं पाहिजे, बाईला स्वत्वाची जाण आली पाहिजे, बाईला आत्मभान आलं पाहिजे, बाईला स्वाभिमान तिचा जागृत झाला पाहिजे. पण हे केव्हा येईल, तिची एक सामाजिक ओळख निर्माण होईल तेव्हा ते येईल, तिची एक सोशल आयडेंटिटी निर्माण होईल तेव्हा येईल. सोशल आयडेंटिटी नंतरचा भाग आहे, तिला खरी स्वतःची ओळख आठवायला पाहिजे. मी काय आहे, मला काय चांगलं येतं, माझ्यामध्ये काय स्किल आहे. तर मला वाटतं घर, शाळा, समाज जसं तिला बाई म्हणून एका चौकटीत बंदिस्त करण्यासाठी फार लवकर पुढे येतं, तसं तिच्यामधल्या कला गुणांचा, स्किल, कौशल्याचा शोध घ्यायला पुढे आलं पाहिजे, तिची ओळख निर्माण झाली पाहिजे. सगळ्यात आधी बाईला जर स्वतःचा उद्धार करायचा असेल, बाईला जर नवीन काहीतरी करायचं असेल, व्यक्ती म्हणून समाजाने तिच्याकडे बघावं, ही सुरुवात झाली पाहिजे. तर बाईनं आधी शिक्षण घ्यावं आणि आर्थिक स्वावलंबी व्हावं, हे अत्यंत गरजेचं आहे. बाई परावलंबी असली, तिला नको म्हणण्याचा, नाही म्हणण्याचा, विरोध करण्याचा, नकार देण्याचा अधिकार नसतो. त्यामुळं बाईनं आधी आर्थिक स्वावलंबी होणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि घरातही मुला मुलींना वाढवताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर किंवा ज्योतिबा आणि सावित्रीबाई पण हेच सांगतात, बाईमध्ये ती कुवत आहे, बाईमध्ये ती क्षमता आहे, बाई जेवढी संवेदनशील आहे, संयमशील आहे, तेवढीच ती बदल घडवून आणण्यात पुढे येऊ शकते प्रभावीपणे. यासाठी बाईनं बदलासाठी कटिबद्ध राहायला पाहिजे. परंतु ठेविले आनंदे तैसी राहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान, ही जर वृत्ती असेल नकारात्मक बाजूने की मला काही करायचंच नाही याच्या पुढे, ही बाई आणि मला हेच केलं पाहिजे, म्हणजे घरातल्या वडील धाऱ्या ज्या महिला असतात ना, आजी, काकू, मामी, मोठी बहीण वगैरे, त्या घरातल्या लहान मुलींना किंवा ज्या तरुण मुली असतात त्यांच्यावर हे सातत्याने थोपवण्याचा प्रयत्न करतात. ही पद्धत आहे, लोक काय म्हणेल, समाज काय म्हणेल. ते प्रश्न विचारला तर त्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची तयारी आजही गरजेची नसते. म्हणजे आमच्याकडे BSc ची एक मुलगी दुपारच्या असेंब्लीमध्ये ती चक्कर येऊन पडली आणि ती म्हणते की उपवास होता. म्हटलं कसला उपवास, नाही सॉरी, आज काही टिफिन नाही आणलेला आहे कारण आज नागपंचमी आहे आणि आमच्या घरात काही ठेवत नाही. म्हटलं अरे तू दान दिशा आपटली, म्हटलं खाली तिच्या डोक्याला लागलेलं आहे. ही प्रथा कितपत तुझ्या जगण्याप्रती चांगली आहे. तर घरी जाऊन तो आईला विचार, आता आज टिफिन दिला नाहीये, मला हे एवढं लागलेलं आहे, माझ्या पोटात काही नव्हतं, एवढ्या दुरून मी आले. पुरी 12-13 किलोमीटर बसून येतात.
त्यात 2-3 किलोमीटर स्टँड पर्यंत, बस स्टँड पर्यंत तिथून बस मिळते. गावात वावरात शेतात राहणाऱ्या मुली आहेत आणि एवढ्या लांब पायपीट करत येताना त्या मुलीची 17-18 वर्षाची मुलगी बरं ते ऊन असेल रस्त्याने आणि हा सगळा त्रास कसा सहन होईल. मग ती मुली त्या मुलीला म्हणलं की तू घरी जा आणि तुझ्या आईला विचार की हे का करतो आपण. आणि जर तुझ्या आईने अगदी लॉजिकल उत्तर दिलं तर मी प्रतिभा जाधव आजपासून हे सगळं करणार. तुझ्या आई जे जे पाळते ते फक्त मला उत्तर शास्त्रोक्त पाहिजे. मला ते पण उत्तर आहे. मग ती घरी गेली आणि तिच्या आईला विचारलं की आई हे असं का करतात म्हणून. हे बघ मी पडले मॅडमने मला विचारलंय की याच्या मागे कारण काय वगैरे. तिची आई म्हणली तू जास्त तरतर करायला लागली एवढी उठपट करायची नाही, जेवढं सांगितलं तेवढं करायचं. म्हणजे या गोष्टीला आणणारी घरातली स्त्रीच आहे. आणि किती अंधानुकरण आहे हे. त्या मुलीने मात्र त्याचं विश्लेषण मागितलं, त्याची चिकित्सा करून जायला लागली की तेव्हा तिचं तोंड अशा पद्धतीने बंद करण्यात आलं. किंवा आमच्याकडे एक BCS ला शिकणारी मुलगी जी भर पावसाळ्यात अनवाणी येते, महिनाभर अनवाणी येते, 2-3 दिवस मला ती दिसली तर म्हणजे काही चप्पल तुटली का तुझी, काय झालं तर पैसे नाहीये चप्पल घ्यायला. कोणत्या वर्गात आहे, इथेच आहे की. ते म्हणे हो. मला वाटलं आधी बाहेरची आहे ती. तिथे आली तर तिला विचारलं मी चप्पल का नाही घातली. मग ती मला मोठ्या कौतुकाने सांगू लागली की मॅडम माझ्या अमुक जवळचा नातेवाईक वाटला आहे तर माझं मी नवस बोलले किंवा काय असं ती म्हणली मी बोललेलं आहे की महिनाभर मी पायतान घालणार नाही पायात, मी घालणार नाही पायात. म्हटलं तू कोणत्या वर्गात शिकतेस. म्हणजे BCS. म्हटलं मग अगं काही वाटायला हवं, आपण शिकतो काय आणि तो वागतो काय. आपल्या वागण्यात आणि आपल्या शिक्षणात एक वाक्य तर यायला नको. काही नाते म्हटलं तू चप्पल घातली नाहीस की त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळणार आहे. तू एवढा जवळचा नातेवाईक म्हणते आणि तू चप्पल एवढ्या लांबून येते अनवाणी, काही झालं तुला पायाला, पावसाळ्याचे दिवस सगळ्या रस्त्यात घाण इतक्या लांबून तू येते आहेस, काही टोचलं चावलं काय भाग परवडे. तिला म्हटलं BCS ला शिकणारी मुलगी जर असा विचार करत असेल तर मला धाक पडतो. म्हटलं मला भीती वाटते की BA ला शिकणारे लोक काय विचार करत असतील. तर आपल्याकडे हे आहे हे सगळं ते कुठून येते. तर ह्या मला असं वाटतं की खरं तर पालकांची एक महत्वाची भूमिका आहे. ही सजगता खरं तर पालकांमध्ये आली पाहिजे. ते बायस जेंडर बायस वागणं ते असतं समाजाचं असतं तो, पण घरात आपल्या वैचारिक वातावरण पाहिजे. ही पालकांची जास्त करून महत्वाची जबाबदारी आहे मला वाटतं. तुम्ही तुमच्या पालकांचं वैचारिक भरण पोषण जेव्हा करता तेव्हा ती मुलं इतर समाजातल्या मुलांपेक्षा वेगळी घडायला लागतात. ते वेगळ्या पद्धतीने विचार करतात. म्हणजे कधीही आधी त्यांच्या डोक्यात जात धर्म येत नाही, लिंग येत नाही, प्रदेश येत नाही, आधी माणूस येतो. माणूसच असला पाहिजे त्यांच्या डोक्यामध्ये. काय होतंय ही सगळी विषमता पेरली गेली ना की ह्या सगळ्या विषमतावादी वातावरणात वाढल्यानंतर ती मुलं मोठी झाली, नागरिक म्हणून घडू लागली ना की एक मोठा बारूद म्हणूया आपण बॉम्ब सारखे होतात. कारण वैचारिक भरण पोषण झालंच पाहिजे. ते कुठे एकांकी विचार करतात. त्यांचा चष्मा जो असतो ना तो विषमतावादी चष्मा. या मुलांमध्ये जर समता, लिंग समानता किंवा जातीय विषमता पेरली गेली नाही, धार्मिक द्वेष जर वेळी नष्ट केला, त्याच्या मनात तो येऊन दिला नाही, तशा पद्धतीचं वातावरण घरात ठेवलं, खूप चांगला बदल होऊ शकतो. मला वाटतं घरातली पालकांची भूमिका खूप महत्वाची आहे, शिक्षकांची भूमिका महत्वाची आहे. ही मुलं त्यांच्यामधली ना संवेदनशीलता आटत चाललेली आहे. म्हणजे पटकन द्वेष वाटतो, म्हणजे सहज प्रेम कोणा या मुलांमध्ये विद्रोह म्हणजे काय. तर नागराज मंजुळे यांनी विद्रोही साहित्य संमेलनात छान विधान केलं होतं की प्रेम करणं हा विद्रोह आहे. द्वेष कुणीही करू शकेल, विषमता कुणीही डोक्यात ठेवून वागू शकेल, परंतु आपण एकमेकांविषयी प्रेम वाटणं गरजेचं आहे. प्रेम करायला बुद्धीचा वापर करावा लागतो. द्वेष करायला लागत नाही, भांडायला लागत नाही, अपशब्द उच्चारायला लागत नाही. तर ह्या अशा पद्धतीने आहे. मला वाटतं की घर, शाळा, समाज हे तिन्ही जर माणसाच्या व्यक्तिमत्वावर एवढा मोठा परिणाम करत असतील, प्रभाव टाकत असतील, इथूनच समतेची बीज पेरली गेली पाहिजे. जाता जाता फक्त एक माझी कविता इथे सादर करेल मी.
आणि थांबेल. पवार सर ठीक आहे ना? ओके ओके मॅडम. लढणारीची कविता आहे माझी आणि मी तुमच्या पुढे ठेवेन. किती लढते किती सुरते, किती लढते तिच्या जगामध्ये तिला पूजते आहे. ती वादळा परतवली तुफान झेलली आहे. किती वादळा परतवली तुफान झेलली आहे. जिहाळ्याच्या शब्दांनी, जिहाळ्याच्या शब्दांनी माणूस जोडते आहे. सुखाने नांदते येते, सुखाने नांदते येते, सुखाशी भांडते आहे. बुधनी काळ जाते या जगाला सांगते आहे. उद्याचे स्वप्न माझ्या या डोळ्यातली आहे. उद्याचे स्वप्न माझ्या या डोळ्यातली आहे. हरवलेली असेला मी, हरवलेली असेला मी, हताशाचे आहे. किती लढते किती झुरते तरी पुरते इथे आहे. शेवटचं कडवं आहे. हे कडवं म्हणताना मला नेहमीच खूप अभिमान वाटतो, अभिमानाला भरून येतो. ते कडवं असं आहे. रमा साऊजी जाऊची, रमा साऊजी जाऊची मिले तरी आहे. रमा साऊजी जाऊची मिले तरी आहे. माझी लेखणी कविता पूर्तीने तिरे आहे. भीती आता कसली ना, भीती आता कसली ना, कुठले शल्यही नाही. माझे संविधान फिरे, माझे संविधान फिरे, माझ्या जगण्याची ग्वाही, मुक्त जगण्याची ग्वाही, मुक्त जगण्याची ग्वाही. आपण संविधानवादी असलं पाहिजे, कारण संविधान सगळ्याला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क देतो. स्त्री असो नाही तर पुरुष, त्यापुढे कोणतीही विषमता नाही, कोणतेही भेदभाव नाही. मी इथे थांबेन. मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल तुम्हाला सगळ्यांचे आभार मानते. जय संविधान, जय लोकशाही, जय भारत. Oh, thank you so much, ma'am. Really, it was very inspirational speech to each and every woman of our country on the occasion of International Women's Day. You have talked about self-reliance is the only key to get equal rights to women. Also, you have talked about education is the only weapon to get equal opportunities in the 21st century. Because in our country, all the women have brought together only due to the traditional things. So they have to leave the traditional things and they have accept the scientific views in their life. At the end of your speech, you have present a very nice poem which having the very valuable information about the woman. Really, it was very nice, informative, knowledgeable session. Thank you so much, Pratibha Jadhav ma'am. Now I would like to request to Mamita Kaur ma'am to present their speech. Dr. Manita Kaur ma'am. Yes ma'am, just unmute yourself. What's your name? Manita. Just a second ma'am. Okay ma'am, now you can unmute yourself. Okay. Okay, thank you very much, sir. Welcome ma'am. जी. Very good morning, all of you. Good morning. First of all, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं और रंगों के त्योहार होली की ढेर सारी बधाइयां। आदरणीय प्रचार महोदय श्री डॉक्टर बी आर बोडके सर नमस्कार।
मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सच अ नाइस कॉन्फ्रेंस सर। IQAC समन्वयक श्री डॉक्टर प्रभाकर शिवराज स्वामी सर एवं कार्यक्रम संयोजक श्री बलीराम पवार सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप सभी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, वह एक सराहनीय कार्य है। पूरे महाविद्यालय को इसके लिए बहुत बहुत बधाई सर, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। There are many respected dignitaries here, Dr. Vibha Pandey ma'am, Dr. Ms. Sir, and Dr. Guna Shekhra sir, and Dr. Pratibha Jadhav ma'am. आप सभी को मेरा नमस्कार और शुभकामनाएं। जाधव मैम का लेक्चर बहुत ही अच्छा था और उसके लिए बधाई मैम आपको बहुत बहुत। और सर आज्ञा हो तो मैं बिना विघ्न के अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं? जी सर, ओके ओके मैम। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है, सम्मान किया जाता है, वहां देवता निवास करते हैं। नारी एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें सृजन की चेतना सुषुप्त सी रहती है। नारी एक आभा है जो हजार हजार पहलुओं से दीप्त हो रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का व्यापक प्रचार इस बात की ओर संकेत करता है कि इस प्राचीन सभ्यता में नारी का सम्मान किया जाता था। पूर्व वैदिक युग में नारी को सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। परिवार में पत्नी व कन्या को प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। सामाजिक व धार्मिक कार्यों में उनकी स्थिति पति के समकक्ष थी। वैदिक युगीन भारतीय नारी का इतिहास हमें वेद, पुराण, उपनिषदों आदि से प्राप्त होता है। वैदिक समाज वर्णाश्रम व्यवस्थाओं की अत्यंत सरल और स्पष्ट मान्यताओं पर आधारित है। विद्वत जनों की ऐसी मान्यता है कि इस युग में नारी की स्थिति केवल सम्मानजनक ही नहीं अपितु गौरवपूर्ण भी थी। वेद, उपनिषदकार, स्मृति काल में उन्हें विद्या ग्रहण करने का अधिकार था। स्त्रियों को दार्शनिक संवादों में भाग लेने के लिए की स्वतंत्रता थी। हॉपकिंस का मत याद आ रहा है मुझे। उन्होंने कहा था कि स्त्रियों को नित्य गायन की शिक्षा में प्रवीणता के लिए प्रेरित किया जाता था। ऐसा तैत्तिरीय संहिता, मैत्रेयी संहिता और शतपथ में उल्लेख मिलता है। वैदिक युग में नारी को पुरुष की अर्धांगिनी स्वीकार किया गया है। यह मूल विचार वैदिक युग से ही अस्तित्व में आया। वैदिक भारत में समाज की स्थिति आदर्शमूलक थी। उसमें नैतिक वातावरण का प्राधान्य था। निश्चय ही वैदिक समाज में भारतीय नारी परिवार का वहन करती थी। वह ब्रह्मवादिनी और मंत्र दुष्टा भी थी। ऋग्वेद में कहा गया है कि पत्नी घर पर रानी बनकर रहे। पति पत्नी मिलकर यज्ञ करते थे। गृह और गृहस्थ धर्म का मूल आधार नारी ही थी। परिवार में कन्या का जन्म होता था तो उसका उल्लास से स्वागत किया जाता था। पुत्र व पुत्री में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था और सम्मान भी पुत्र के समान ही दिया जाता था। उस काल में कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के बिना अधूरा होता था। इस तरह से वैदिक काल में नारी की पारिवारिक स्थिति काफी सम्मानीय थी। अगर हम और अन्य कालों की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा खराब होने लगी थी। इस काल में ऋग्वेद काल की तुलना में नारियों की प्रतिष्ठा में कमी आई। सभा में नारियों का प्रवेश निषिद्ध हो गया। प्राचीन और अर्वाचीन विचारक नारी को संस्कृति और सभ्यता का मेरुदंड मानते हैं। विश्व की सभी संस्कृतियों में नारी के प्रति विशेष उदार और उन्नत विचार रखे गए हैं। नारी को शक्ति का महान भंडार और परिवार की नींव माना गया है। चूंकि नारी परिवार समुदाय की नींव है और समुदाय राष्ट्र की नौका की वास्तविक कर्णधार है। परंतु इस सबके पश्चात भी व्यवहारिक रूप में नारी की स्थिति ऐसी नहीं है। समय के साथ इसमें परिवर्तन भी आते गए। मुझे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, वो मैं रखना चाहूंगी। सपना जन्मा और मर गया, सपना जन्मा और मर गया, मधुर ऋतु में ही बाग झर गया। इनके बिखरे हुए बटुरू या नव सृष्टि सजाऊं में, रहा कौन सी जाऊं मैं। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां भी नारी के अंतर्मन में उठ रहे अंतर्द्वंद को जागर करती है। जब नारी सभी जगह से निराश हो जाती है तो उसके लिए हमारा संविधान उसका
रक्षक बन नारी के जीने का नया मार्ग प्रशस्त करता है। भारतीय संविधान महिलाओं के लिए 3 तरीके से मंशा रखता है। प्रथम, संविधान महिलाओं पुरुषों में लैंगिक भेदभाव मिटाने की मंशा रखता है। सेकंड, संविधान की मान्यता है कि महिलाओं को पारंपरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है या हीन समझा गया है, तो इस अन्याय को समाप्त करने के लिए संविधान सरकार को महिलाओं के Ma'am, you are mute, ma'am. Please unmute yourself. सर अनम्यूट ही है। Okay. जी आई एम ऑडिबल सर? Yes, ma'am. Yes. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान ही कई अधिकार मिले हैं। उनके लिए शिक्षा, व्यवस्था, व्यवसाय, राजनीति आदि सभी क्षेत्र खुले हुए हैं। स्वतंत्रता से अब तक महिलाओं की उन्नति के लिए और समुचित न्याय दिलाने के लिए सरकार ने तरह तरह के कानून बनाए हैं। विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के अनुसार समानता का अधिकार, महिला बच्चों के लिए कुछ विशेष उपबंध करने का अधिकार अनुच्छेद 15(3) में, नौकरी या उसके अवसरों के लिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 में दिया गया है। महिला पुरुषों को समान जीवन जीने का अधिकार 39 से, महिलाओं का समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार। इस तरीके से भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और स्वावलंबी बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई प्रयास किए हैं और कर भी रहे हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक और सजग करना आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्हें सशक्त बनाना और सशक्त बनाने का सबसे कारगर तरीका उन्हें कानूनी अधिकारों की जानकारी देना है, ताकि वह जान सके कि कानून के द्वारा वे कौन कौन से अधिकार प्राप्त कर सकती है, अत्याचार, अन्याय एवं शोषण का मुकाबला कैसे कर सकती है। रूसो ने लिखा है, मनुष्य जन्म मुक्त रूप से लेता है लेकिन बाद में जंजीरों में जकड़ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नारी जन्म लेने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। वैश्विक स्तर पर माना जा रहा है कि मौजूदा दौर में महिलाएं तेजी से तरक्की कर रही है। वह हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है। फिर भी देश के अलग अलग हिस्सों में घटनाएं सामने आ रही है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में महिला उत्पीड़न अपनी चरम सीमा में है। छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना, अपहरण आदि ऐसी कई घटनाएं लगातार घटित हो रही है। प्राचीन युग से वर्तमान में उत्पीड़न की मात्रा में कमी या बढ़ोतरी अवश्य हुई है, लेकिन यह उत्पीड़न समाप्त नहीं हुआ। आज भी समाज में महिलाओं को दहेज या घरेलू हिंसा या अन्य तरीके से शोषित किया जाता है, शोषण किया जाता है। संविधान में आज अनेक कानून है महिलाओं के लिए। संविधान में उन्हें कई बराबरी के अधिकार दिए गए हैं, परंतु आज भी महिलाएं शोषित है। आज ही मैं जब समाचार पत्र पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पढ़ा मैंने, तो वो रिपोर्ट कहती है कि सबसे खुशहाल देश वो है जहां लैंगिक समानता ज्यादा है। दुनिया के शीर्ष 10 खुशहाल देशों में 8 में संसदीय पदों पे 40% से अधिक महिलाएं हैं, जिसमें से कुछ देश का जिक्र करूंगी मैं, पूरे 10 देश का तो नहीं, समय का ध्यान रखते हुए। फिनलैंड है जो हैप्पीनेस रैंक में फर्स्ट पोजीशन पे है। वहां संसद में महिलाओं का परसेंटेज जो है 45.52% है। वहीं डेनमार्क देखे हैप्पीनेस रैंक उसकी तो सेकंड पोजीशन पे है और संसद में महिलाओं का परसेंटेज 39.70 है। इसी तरह आइसलैंड है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, सभी में उनका परसेंटेज है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में सामाजिक हित के काम करने और अच्छे परिणाम लेने के लिए अधिक एकजुटता रखती है, दूसरों की जरूरतों के बारे में अधिक जागरूक होती है। यह बात भी हैप्पीनेस इंडेक्स के शीर्ष 10 देशों के अध्ययन करने से स्पष्ट होती है। दुनिया के शीर्ष 10 देश सबसे खुशहाल देशों में से 8 देशों में संसदीय पदों पर 40% से अधिक महिलाएं हैं। अध्ययन से निकला है कि सबसे खुशहाल देश लैंगिक समानता में भी असाधारण है, यानी वहां महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान हासिल है। मैं कुछ सजेशन देना चाहूंगी। हिंसात्मक व्यवहार की समाप्ति व स्त्री के शोषण को रोकने के लिए बिल्कुल नीचे से अर्थात परिवार व समुदाय के स्तर से प्रयासों को प्रारंभ करना होगा। कन्या भ्रूण हत्या के पीछे की जो मानसिकता है, उसे पोषित करने वाली जो कुप्रथाएं हैं, विशेष रूप से दहेज प्रथा,
ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण कदम जन जागरूकता सृजित करना होगा, कानूनी रूप से सशक्त करना होगा, महिलाओं को बिना किसी रोक टोक के अपने निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना और उन्हें पुरुषों के बराबर मानना राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति के लिए अनिवार्य है। इस तथ्य को आज प्रमुखता से स्वीकार कर लिया गया है कि बेहतर समाज की रचना के लिए पुरुषों के समान महिलाओं को मान्यता देना अनिवार्य है। महिलाओं को इतना सशक्त बनाया जाए कि वे अपने अधिकारों और उम्मीदों का प्रयोग स्वयं कर सके और इसके अवसर न मिलने पर निर्भीकता से अपना दावा पेश कर सके, क्योंकि कोई भी स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज महिलाओं को सशक्त किए बिना विकास की कल्पना नहीं कर सकता। सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को बराबरी का सम्मान न सिर्फ व्यवहार व कार्य रूप में वरन दिल से इस सम्मान को स्वीकार किया जाए। अतः सबसे महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में जन जागरूकता सृजित करने का होगा। एकाएक आमूल परिवर्तन की कल्पना दीवा स्वप्न जैसी है। आप इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत और सभी ऑर्गेनाइजर और महाविद्यालय की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर। Thank you so much, ma'am, for putting in front us the words about women's equality. In your speech, you have talked about the rights that the countries has given to the women. We know that Finland is the first country who has given an opportunity to women to be a president of their country. It has been happened in 16th November 1985 when Sanna Marin, she has become the first president of Finland. And second one is that Denmark is the country who has given opportunity to the women. There are near about 39% women are there in their presidency. Now, I would like to invite the chairperson of this today's national webinar, Dr. Bodke B.R. sir, for the presidential address. शुभ दोपहर सभी विद्वज्जन प्रतिभागियों को प्रणाम। आज जागतिक महिला दिन और पूरा देश महिला सशक्तिकरण इस विषय पर चर्चा कर रहा है। दूसरी बात, पूरे देश में रंगों का उत्सव होलिकोत्सव बड़ी धूमधाम से देश मना रहा है। सभी प्रतिभागी विद्वज्जन सभी को जागतिक महिला दिन और होली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटक डॉक्टर विभा पांडे मैम, सहायक प्राध्यापक शासकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय ओहरा यूपी, प्रमुख मार्गदर्शक प्रोफेसर मोहम्मद टीएस महेश, समाजशास्त्र विभाग कोलंबो विश्वविद्यालय श्रीलंका सर का बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरे सम्माननीय वक्ता डॉक्टर गुणशेखर AMAS, समाजशास्त्र विभाग प्रमुख रोहाणा विद्यापीठ मात्रा श्रीलंका, सर जी का भी
मैं महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अभी महिला प्रवक्ताओं में डॉक्टर प्रतिभा जादव मैम, सहायक प्राध्यापिका कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय लासलगाव, नाशिक, महाराष्ट्र, डॉक्टर अमिता कौर मैम, सहायक प्राध्यापिका राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, शासकीय महाविद्यालय बिचवा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, सभी प्रमुख मार्गदर्शक वक्ताओं का मैं महाविद्यालय की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो हमारा अपना निजी विषय है, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समता या स्त्री पुरुष समानता, बहुत ही अच्छा विषय आयोजक पवार सर ने यहाँ पर रखा है। और इस सुंदर इस विषय को टेक्निकल सहायता जिन्होंने प्रदान की है वो हमारे कॉलेज के IQC प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर प्रभाकर स्वामी, आयोजक समाजशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर बलिराम पवार, महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक गण, यहाँ पर सारे वक्ताओं ने बहुत ही अभ्यासपूर्ण अपना मंतव्य यहाँ पर रखा। दोस्तों, हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक स्त्री को हम संसार रूपी पहिए के दो, संसार रूपी जो गाड़ा है, रथ है, उसके दो पहिए मानते हैं, एक पहिया स्त्री को मानते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से आज भी हम स्त्री को समानता का अधिकार नहीं देते हैं। प्रतिभा जादव मैम ने अपने प्रखर विचार यहाँ पर रखे हैं कि प्राचीन काल से लेकर महिलाओं को एक और देवी माना जाता है, पूजा करने के योग्य माना जाता है, और दूसरी ओर उसकी प्रताड़ना की जाती है। क्या आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में और हमारे देश में अगर स्त्री पूजनीय है, स्त्री समान अधिकारिणी है, तो जन्म दर के बारे में हम देखते हैं कि स्त्री पुरुष समानता क्यों नहीं है। घर में यदि एक बालक यानी कन्या और बालक है तो उसमें हम क्यों भेद करते हैं? जन्म जब हम कोई माता बालक को जन्म देती है तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों में या घर परिवार के जो लोग होते हैं, उसमें महिलाओं का ये आग्रह होता है कि हमें बालक चाहिए। कौन सा बालक चाहिए? पुरुष हमें चाहिए। इसका नतीजा हम आज देखते हैं कि गांव-गांव में, शहर-शहर में अनेक सैकड़ों युवा बिन ब्याहे हैं। ये नौबत क्यों आई है? एक और हम जेंडर इक्वलिटी का नारा लगा रहे हैं और दूसरी ओर सन्यासी बनने वालों की संख्या हजारों की तादाद में है। महिलाओं को अगर समानता का हक देना है तो सबसे बड़ी बात है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है कि जो
महिला को समानता का अधिकार दिला सकती है, क्योंकि जब महिलाएं शिक्षा लेगी तो शिक्षा के माध्यम से वो खुद के पैरों पर खड़े होगी, यानी आर्थिक स्वावलंबन। स्त्री पुरुष समानता अगर हम चाहते हैं तो महिलाओं को जो है महिला सशक्तिकरण हम जिसे मानते हैं, महिला सबलीकरण हम जिसे मानते हैं, महिलाओं का सबलीकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण कब होगा? जब वो पढ़ेगी, लड़का लड़की इसमें भेद न करते हुए दोनों को समान हक देते हुए समानता के साथ उनको अगर हम पढ़ाई कराने भेजते हैं, चाहे वह उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, प्राथमिक का हो, माध्यमिक का हो, उच्च माध्यमिक का हो, और नौकरी का क्षेत्र हो, हम देखते हैं कि जिस घर में महिला आत्मनिर्भर होती है उस घर की परिस्थिति, उस परिवार की परिस्थिति अलग होती है। यानी आर्थिक स्वावलंबी जो महिला होती है उसकी ओर देखने का, उस परिवार का, उस समाज का नजरिया अलग होता है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी है, घर को चलाती है, घर परिवार का गुजारा करती है। हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक फिर धार्मिक, सांस्कृतिक रूढ़ी, प्रथा, परंपराओं के जंजीर महिलाओं के पैरों में अटके हुए हैं, और वास्तविकता यह है कि वो जंजीरें महिलाएं आज छोड़ना नहीं चाहती। प्रोफेसर डॉक्टर जादव मैम ने यहाँ पर बताया कि BCS, BSc जैसे प्रोफेशनल अभ्यासक्रम को पढ़ने वाली लड़कियां उपवास रखती है, और यहाँ तक कि वो अनीमिया से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और चक्कर आकर गिर जाती है। तो महिलाओं ने ये जो रूढ़ी प्रथा परंपरा के, धार्मिकता के, संस्कृति के बंधन जो है पुरुष संस्कृति ने भी और महिलाओं ने भी खुद होकर अपने पैरों में बांध लिए हैं। इन जंजीरों का अगर तोड़ना है तो महिलाओं को अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है महिला सशक्तिकरण और महिला जिसे हम जेंडर इक्वलिटी, स्त्री पुरुष समानता मानते हैं। ये जो बातें कब होगी? जब महिला को हम एक मानुष्य समझेंगे। आज भी हम महिला को क्या सही मात्रा में मानव मानते हैं? नहीं, क्योंकि हम घर में, परिवार में महिला को एक बगैर खर्चे की मशीन मानते हैं। सवेरे 5 बजे से लेकर शाम 9-10 बजे तक बिगैर खर्चे की काम करने वाली, न थकने वाली एक ऐसी मशीन जो हमें खाना खिलाना, घर की साफ सफाई करना, घर ठीक ठाक करना, परिवार चलाना, ये सब बातें वो करती है। तो घर में ये जो भूमिका महिलाओं की है, महिलाओं के साथ महिला की जो भूमिका है वह भूमिका जब घर में पुरुषों की होगी तभी स्त्री पुरुष समानता आएगी, अन्यथा, क्योंकि हम देखते हैं कि पितृसत्ताक कुटुंब पद्धति और मातृसत्ताक कुटुंब पद्धति, दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो मातृसत्ताक कुटुंब पद्धति हम ही देखते हैं, और जिस प्रदेश में, जिस घर परिवार में मातृसत्ताक कुटुंब पद्धति यानी घर की प्रमुख महिला है, उस परिवार में, उस घर में संपन्नता होती है मित्रों, क्योंकि निश्चित रूप से पुरुषों से ज्यादा, पुरुषों से अधिक मात्रा में घर परिवार को चलाने का तजुर्बा, होशियारी
महिलाओं में पुरुषों से अधिक होती है। इसलिए जब तक शिक्षा की समानता और आर्थिक रूप से समानता नहीं आती, तब तक जेंडर इक्वलिटी या महिला और पुरुष समानता की बातें, इस प्रकार की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां कितनी भी अगर हम लेते हैं तो व्यर्थ होगी। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं और इस संगोष्ठी के आयोजक को धन्यवाद देता हूं कि ये जो चर्चा हुई बहुत ही सफल चर्चा हुई, और इस चर्चा के माध्यम से निश्चित रूप से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगी, शिक्षा की दृष्टि से स्वावलंबी होगी, और सबसे बड़ी बात है कि पुरुषों को इस प्रकार की मानसिकता बदलनी चाहिए। स्त्रियों को एक मानवी के रूप में जब तक नहीं देखते, एक मानुष के रूप में हम जब तक नहीं देखते, तब तक इक्वालिटी की बात व्यर्थ सिद्ध होगी। उसे सबसे बड़ी बात है, हम उससे पहले मानव मानते। अगर मानव मानते हैं, मानुष मानते हैं, तो निश्चित रूप से इस समानता की बातें आगे चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जिन जिन प्रमुख मार्गदर्शक विद्वजनों ने मार्गदर्शन किया, फिर एक बार सभी के प्रति मैं वैयक्तिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी को, आयोजकों को इस संगोष्ठी की सफलता के लिए हार्दिक उनका अभिनंदन करता हूं, शुभेच्छा देता हूं, और मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your valuable presidential address. Really, we are just talking about the gender equality, but in our day-to-day life, we are doing gender discrimination. I would like to say something about your speech, that only two things we are giving to the women in the world, not only in India. They have the works only cooking and nurturing babies, the only responsibilities to the women in the world given by male-dominated society. You have also talked about the comparison between male and women. I would like to say something about it. When we read the work, feminist work by Tarabai Shinde, it is in Marathi, Stri Purush Tulna, there she has given a one beautiful quote, that diverse enemy. Diverse enemy means you are the enemy of yourself. Woman is the enemy of woman. In your presidential address that you have talked about, that who are torturing to the woman, the first thing is that the woman is torturing to the woman. Who needs a baby boy? Who are demanding the baby boys? Only the women are demanding baby boys. The old women in the family, they are telling that the man is the everything for their family. Thank you so much for giving your presidential address. Now, I am going to present the vote of thanks for today's international conference. I am very much thankful to the chairperson of today's international conference, Dr. B.R. Bodke sir, for giving us an opportunity to organize this international conference and being with us as a chairperson for this conference. I am very much thankful to the inaugurator of today's program, Dr. Yuba Pandey ma'am, for inaugurating the all sessions. I would like to very much thank to Professor Mahmood Mahish sir, Department of Sociology, University of Colombo, from giving a very nice speech on gender discrimination. I am also very much thankful to Professor Dr. Gunasekhara sir, Head Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Science, University of Ruhana, from Sri Lanka. Sir also has given very nice presentation about gender equality. Last but not least, I am very much thankful to Dr. Pratibha Jadhav ma'am. She has given the traditional importance of gender equality in her mother tongue. Lastly, I would like to thankful to
the Manita Kaur ma'am for giving us very nice speech about gender discrimination and equality and role of women in higher education. I am very much thankful to the organizing committee for organizing such a wonderful international conference. Also, I would like to thank to Dr. Abdul Khalid sir. Sir is from Assam for giving us a very good, very nice speakers for this international conference. Thank you so much, sir. Last but not least, I am very much thankful to all the participants for their overwhelming response and joining to this international conference. Thank you so much. With the permission of chair, I conclude the meeting.